exercise 12.3 question number 8. Yes. In figure 12.26 depict a racing track whose left and right ends are semicircular. Semicircular. Okay. Yes. ओके रेसिंग ट्रैक है यहाँ पे भी आएगा ओके यस आपके पास जो ये लाइन है यहाँ से लेंथ जो थी ये लाइन 106 मीटर की and this length is also 106 meters given. This is also 106 meters. This is also 106. Okay. It is 60 meter wide. And width is 10 meter. It 10 meter. This is also 10 meter. Okay. Yes. Now it becomes A, B, that is C, D, okay, E, F, G, H, I, J, K, and F. Okay, yes. ये आपके पास एक रेसिंग ट्रैक है, ठीक है। इस रेसिंग ट्रैक में क्या है, यहाँ पे 106 मीटर दे रहे हैं। इट इज ऑल्सो 106 मीटर। ये आपके पास इसकी जो विड्थ है ये दे रखी है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी जो विड्थ वो 10 मीटर कीमत है, यहाँ पे 10 मीटर कीमत। फर्स्ट पार्ट इज दैट वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। ये इनर एज ये इनर एज का भी लाइन फाइंड आउट करना, ये लाइन फाइंड आउट करना। यस ओके। अब यहाँ पे 60 मीटर है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 30 मीटर। तो आर जो है वो क्या आपके पास 30 मीटर है। अब देखिए आप, ये आपके पास ये 10 है, ये 60 है और ये आपके पास कितनी 10 कंप्लीट नहीं हो गई, 80 हो गई। तो इसकी जो रेडियस होगी ये यहाँ से लेकर आधा रेडियस है कैपिटल आर। ओके 60 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 एंड दिस इज मीटर। हाँ दैट इज 80 डिवाइड बाय 2 40 मीटर 40 मीटर। ओके इट इज 40 मीटर। जब हम लेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे ये लेंथ थी ये 106 मीटर, ये लेंथ कितनी है 106 मीटर। यस प्रगति, हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो लेंथ है ये कैसे है? ये। हाँ, बताइए। Yes. Yes, semicircle. Yes. G है। हाँ। Yes, yes, very good. Yes. What is the formula? Half. Only pi r. Yes, very good. Yes. It is your circumference of semicircle. As you know that circumference of circle is 2 pi r
and circumference of semicircle is half into 2 pi r. That is pi r. It is pi r. It is also pi r. Okay. Am I right or wrong? Yes, sir. Okay. Yes. Yes. First part. The distance around the track along the inner edge. The distance around the track along its inner edge. Okay. Yes. That is 106 meter. It is 106 meter. It is 106 meter. It is pi r. It is pi r. Okay. Ankush, Yes, sir. Okay. any doubt, any problems? No, sir. 106 plus pi r plus pi r. Okay. Yes. It becomes 212 plus 2 pi r. Okay. Yes. 212. What is the value of pi? 22 by 7. And radius is 30. Small r है ना? 106. 106 plus 106. Plus 106. Okay. Now that is 212 plus 44 into 30 divided by 7. That is meter. रेडियस तो 40 है ना? नहीं, वो small बड़े वाला आता है। वो बड़े वाला radius. Yes. Multiplied it. Sir, 174.28 Sir, 2802 by 7 आ रहा है. Yes. 0. 3 4s are 12. 3 4s are 12 over 1. Yes. LCM is 7 to the 40. 12 7 to the 84 plus 1320. Okay. 2804. Is added. So 2804. 2804. 04. 7 meter. Please do it. Any doubt, any problems? No, sir. Okay. अगर कोई आ गया ना कपड़े का है ना, सर थोड़ा सा गीला है, उसकी सांस नहीं ले रहा है. थोड़ा सी यहाँ कर ले बस. Have you done? Yes, sir. Yes. Second part. Area crack. Have you done? Yes, sir. You have to find out the area of the track. Think about it.
think about it. You have to find out the area of the track. Please tell me how can we do this question? The second part. पूरे का एरिया निकालेंगे फिर इनर वाले का एरिया से माइनस कर देंगे या फ्लैट में Yes. R is 80 by 2. Okay, yes. Second part. Now we have to find out the area of the track. Area of the track. Okay, yes. This is the track. ये track है कि नहीं है? Yes. Rectangle. Rectangle form है. Formation of rectangle. Length is 106 feet. 106 and breadth is 10 meters. 10 meter. So 10 is 60. 10. 10 meter. Okay. Yes. It is also similar. Yes. 106 into 10. और उतने एरिया इतने पोर्शन का हमारे पास देखो हमने किसका एरिया निकाला है? इसका निकाला. मल्टीप्लाई बाय 2 अब कॉलम कहाँ पे आ रही है? कॉलम आ रही है यहाँ पे. तो वो सर सेमी सर्कल ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे इसका एरिया निकालिए. सर बड़ा सेमी सर्कल फाइंड Yes. अब यहाँ पे ये जो ये आपके पास सर्कल है. ओके. ये आपके पास क्या एक सर्कल और है. ठीक है. इसकी रेडियस यहाँ पे 30 है. इसकी रेडियस 40. हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है. द लार्जर पार्ट कैसे करेंगे? वो उसकी रेडियस पहले बड़े का निकाल के छोटे का माइनस का सब पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर. पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर. Am I right or wrong? राइट Okay. Yes. Okay. It is 30. It is your 40. Okay. हमने इसका एरिया निकालना है. कैसे निकालना है? इसमें इसमें क्या फर्क आएगा? area of larger semicircle minus area of smaller circle. Yes. Very good. Yes. So it will be pi by 2 bracket capital R minus small r. Yes. Pi by 2. Pi by 2. Okay. सर ये तो आप उसी प्रयास. फॉर्मूले से आया है ना हाफ पाई आर से Yes. कैपिटल आर Half pi r square. मतलब बड़ा Yes. ले लेंगे. Okay. Concept is clear? Concept is clear or not? Yes. Now area of the track is area of the track. Note down it. Area of the track. There are two rectangles. 106 into 10 plus 106 into 10. Okay. यस सर Yes. There are two sides. यहाँ पे आपके पास यहाँ पे देखिए इस साइड में भी ये पोर्शन है और इस साइड में भी ये पोर्शन है कि नहीं है? यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई 2. यहाँ पे 2 लिखेंगे. यहाँ पे लिखेंगे हाफ पाई आर स्क्वायर
माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर। ओके, और कॉमन आर इसमें हाफ पाई हाफ पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यस, दैट इज 2120 प्लस पाई आर प्लस आर माइनस आर, वाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, the capital R is 40 and smaller r is the value of pi is 22 by 7, that is 40 plus 30 and 40 minus 30. Okay, yes, that is 70 into 10. Okay, this 2120 plus 2200, it becomes 4320 meter square. Any doubt, any problems? Yes. Your next question is, can you do the ninth question as a homework? Ninth question as a homework, can you do it? Now question number 10 is, yes, the area of an equilateral triangle is 17,320.5 centimeter square. Yes, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जब हम पढ़ते तब ये क्वेश्चन। देखिए आप, ये आपके पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, ABC is an equilateral triangle. Okay, and this is the shaded region. Shaded region you have to find out. Okay. मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं अक्सर क्या एग्जाम में देता हूँ आपको। यस, लिसन, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर with each vertex of the triangle as a center. यहाँ पे क्या है, सेंटर है, थोड़ा फिगर थोड़ा सा। Okay, center circle is drawn with radius equal to half the length of side of triangle. अगर मैं यहाँ पे, ये हमारे पास साइड, इस साइड का अगर हाफ कर देता हूँ तो मेरे पास रेडियस आ जाती है, क्या जाती है, रेडियस। लिखा हुआ उसमें। यस, चलो। So first we find out the sector and then we multiply by 3 and then we minus the area of triangle minus the sectors of the circle. To find the area of sector, we have to require the radius. So we Yes. how to find it? Yes. So first we find the side by root 3 by 4 a square. Yes. That is the area of equilateral triangle by that. Yes. Heron's formula. Yes, area of equilateral triangle is given, and as you know that area of an equilateral triangle is root 3 by 4 a square. Yes. Okay. Now you can find out the side by using formula root 3 by 4 a square. You can find the side of equilateral triangle, as you know that the radius of the circle is half the side of equilateral triangles. So A Yes. will be A by Now 2. this is your A. Yes.
area of an equilateral triangle. Equilateral triangle ABC. 17,320.5 Yes. meters square. Centimeter. Centimeters square. Centimeters square. Okay. And area of equilateral triangle is root 3 by 4 a square. 17,320.5. Okay. Now a square is 17,320.5. That is 4 and root 3. And the value of root 3 is 1.73205. Yes. Yes, sir. Yes. Sir. Yes. 17,320.5 into 4 and it is 1.73205. 1.73205. Okay. Now a square a is 17,320.1 and 17,000 no, 3205.1 Yes. 1 2 3 4 5. That is cancel out. This is cancel out. Okay. Yes. This is a square. यहाँ पे क्या है a square. What is a? Root. Yes. A 200 centimeter. Square. 200 centimeter. And as you know, the radius of circle is half the side of equilateral triangles. Yes. A is radius is a by 2. 100 centimeter. 100 centimeter. Okay. Now, Sir, Come to radius the of the point. circle is half of the side of equilateral. radius of circle is half the side of equilateral triangle. लिखा हो क्वेश्चन में पढ़िए. Read the question. अब यहाँ पे देखिए. It is an equilateral triangle and as you know that each angle is of 60 degree in equilateral triangles. Okay. It is 60 degree. It is also 60 degree. It is also 60 degree. Okay. Yes, Vishesh Pal. Yes, sir. How can we find out the area of shaded region? Please tell me. Your radius is 100 centimeter. Angle is given. Radius is given. Area of equilateral triangle is also given. Please tell me. Sir, we can find shaded area by divide 60 by 100. Ansika. Sir, we find out the area of equilateral triangle and then we will subtract the area of Three sectors. Okay. Yes. Ansika is saying that area of equilateral triangle is given. Okay. We will find out the area of three sectors. Theta is given, radius is given. We can find out the area of three sectors. After finding the area of three sectors, we will subtract the area of three sectors from area of equilateral triangles, and we can find out the area of shaded region. Am I right or wrong? Right, sir. Okay. Sit down. Do it fast. Have you done? Yes. Have you done?
shaded region. Area of shaded region. Area of shaded region. Yes. Area of equilateral. Area of an equilateral triangles. Triangle ABC minus area of three sectors. Okay. Yes. Area of equilateral triangle ABC given 17,320.5 minus 3 into theta by 360 into pi r square. Okay. And theta is 60 by 360. The value of pi 22. 3.14. Yes, sir. The value of pi is 3.14 and radius is 100. to it. So one. That is minus 6. Then it will be 3 into 60 by 1.57. 314. Yes, sir. So we'll multiply 157. 157. Answer 1.57 to 157. 157. Okay. Sir, No, sir. Okay. 157. Huh? Yes. What is the answer? So 1620.5. 168.5 centimeter square. Yes, sir. So shaded region में कितना एरिया कवर सेंटीमीटर में. Question number 13. Okay. Yes. In figure 12.31. Okay. OABC. OABC. Sir, I will tell this. OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. OA 20 centimeter square है OABC. Okay. Find the area of shaded region. It is a quadrant. So we'll find the area of the quadrant, area of the square, and then we'll subtract the area of square. बस इसमें एक प्रॉब्लम आ ये है कि इसमें आपका रेडियस नहीं है. So, sir, बस sir, बाकी सब radius ठीक है. get लीजिए, sir. We'll get. OABC. सर हमें AB की लेंथ भी नहीं पता है ना. Sir, आपने A उधर क्या बनाया है? A तो यहाँ है. सर यहाँ पे B है ना. A यहाँ पे सर OABC. Okay. OABC. AB कितना है सर? सर आपने A 2 बार लिख दिया है. Q and P, sir. ये क्या आपके पास? Q and Q and P, sir. Sir, Yes. ये आपके पास P and Q. P. Okay. You to find out the area of shaded region. so It is 20 meter centimeter. Centimeter. It is 20. It is 20. It is 20. Yes. So we will find OC by sin 90. What is Since that? we know CD. आणि धरा देव कोण म्हणतो अब देखिए यहाँ पे. It is a square. We will apply the Pythagoras theorem. Yes, Okay. Listen. We will apply the Pythagoras theorem and we will find out the OB.
your OB will be, after finding out OB will be 20 root 2. Okay, Yes. OB will be 20 root 2, and area of quadrant will be 1/4 pi r square. 1/4 pi r square, and r is 20 root 2. 20 root 2, and area of square will be 400. And you will find you can subtract the area of square from area of quadrant, and you will find out the area of centered region. Ain't got any problems? Can you do it? Yes, sir. Okay, do it. Now question number 14th as a homework. 15th or 16th I will do in the next class. Okay? Okay. बेटा